Namaste Ji, Namaste. Welcome to Courtroom. I sincerely hope that you're doing well. So it is that time of the year again wherein we need to take a look at what the Supreme Court was up to throughout the year. मैंने ये जो lectures जो prepare करा हुआ है, that is primarily for the purpose of any prelims exam or any MCQ oriented exam. So it of course does not cover out all judgments because they are too many and mostly are irrelevant for the purposes of our exams. So this lecture is geared towards helping you out in any exam that you may choose to take. Now let's start. The first important judgment is जो कि पिछले या इनफैक्ट इसी साल में 2023 में शूट कर रहा हूँ, जनवरी 2023 में आई थी, विवेक नारायण शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. इसमें नोटबंदी वाज अपहेल्ड. जो 2016 में जो नोटबंदी हुई थी, that was deemed to be legal, and but there was one judge who dissented, that is Justice B.V. Nagaratna, as it's on your screen. It was a 4:1 judgment. That means 4 judges were in the majority, 1 was in the minority, and she dissented that no, the RBI was not adequately consulted, and she will be the first female CJI ever when her time arrives to be that. And so नोटबंदी was upheld via विवेक नारायण शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. इस चीज़ को लिख लीजिएगा. आपको broadly you do not need to get into nitty-gritties details of the judgment unless and until you are preparing for CLAT PG. Well, then things become really different. However, this serves as a good primer as to which judgments do you need to prepare. अब दूसरी जो जजमेंट है, दैट इज कौशल कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश. इफ यू आर टेकिंग द यूपीएससी लॉ ऑप्शनल और प्रिपेयरिंग फॉर इट इन द ईयर्स कमिंग इन एज इन अगले सालों में, please do have a read of this judgment. I have explained it in a video lecture that is available on our channel. And ये judgment ये लोग पूछेंगे because this primarily relates to the state defined in Article 12 Part 3 of the Constitution. So ये judgment के अंदर काफ़ी बहुत ही महत्वपूर्ण decision है that the state is not vicariously liable for statements made by a minister, and if that minister's statements etc. are violating your fundamental right. इसके अंदर भी Justice B.V. Nagaratna, she didn't quite dissent, but she differed with the majority कि नहीं, if the minister is making statements relating to the state affairs and if that affects someone, then the state will be vicariously liable. ये चीज़ मैंने अपने वीडियो लेक्चर में बता रखी है. Do check it out on the channel and do explore the playlists of the channel. They are very useful in sorting out the various lectures that we keep on doing at Courtroom. Then the third judgment that you need to note down, इसके ऊपर अभी lecture आना है. I just didn't get the time to make it. So this is Arbitration and Conciliation Act 1996. Now DJS pre में DJS का पसंदीदा subject है Arbitration and Conciliation Act. The mains is coming in that general legal knowledge का paper. Of course Civil Law 1, Civil Law 2 के अंदर तो नहीं जाने वाले, बट जो जनरल लीगल नॉलेज का जो पेपर है उसके अंदर तो ये प्रश्न उठ के आ ही सकता है. So 2 judgments were overturned: NL Global Mercantile versus Indo Unique Flame and SMS Tea Estates versus Chandmari Tea Company Private Limited. These 2 were overturned. This was a 7-judge bench. The final decision was given as an unstamped arbitration agreement is inadmissible, although it is not void ab initio. Now this is extremely important even for arbitration proceedings going ahead. So the main case name that will be referred to is in re means reference, interplay between arbitration agreements under the Arbitration and Conciliation Act 1996 and the Indian Stamp Act 1899. बहुत ही I believe the most crucial topic for DJS. Now this year अभी मेंस होने वाला है, तो DJS loves the Indian Stamp Act, DJS loves Arbitration and Conciliation Act. So do have a look at this judgment if you are going to be taking that specific exam in a couple of months time. This judgment again we have discussed it on our channel. This was primarily we discussed it via the point of view of CLAT PG, but it will serve you well. So CLAT PG में MCQs अलग तरीके से निकाले जाते हैं, but the judgment name is Supriyo at the rate या Supriya Chakrabarti basically alias versus Union of India. 5-judge bench upheld the Special Marriage Act 1954, and the right to marry is not a fundamental right for queer persons specifically. So this judgment was a total letdown for many quarters of the folks who applied to the Supreme Court for this specific decision, because there was a liberal CJI at the helm. However, they also worked within the limitations of their topic. We have discussed this judgment inside and out on the channel. Please do check out that lecture if you wish to explore more and more details.
Okay, next we go to Anup Baranwal versus Union of India if you are going to be taking the UPSC next year. Whether you have the law optional or not for prelims, for GS2, this is extremely important. इस पे अपना एक मॉडल आंसर जरूर तैयार करके रख लेना और प्रीलिम्स में डू एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन ऑन दिस. दिस इज अनूप बरनवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. इसके अंदर मेनली एक ये काम किया गया इन दिस जजमेंट. द सुप्रीम कोर्ट सेड कि आप एक काम करिए टू मेंटेन द इंडिपेंडेंस ऑफ द इलेक्शन कमीशन and the appointments of the commissioners therein, which includes both chief and the other PON election commissioners. So it said Prime Minister, Leader of Opposition and CJI की कमेटी बनाइए till the time that you enact a law. कि जब तक आप कानून नहीं बनाते ये कमेटी will overlook the appointments. अब सीजेआई भैया इसमें आके ऊपर बैठ गए. सरकार को, ऑफ कोर्स, किस सरकार को जुडिशरी वाले पसंद हैं कि उसके डोमेन में थोड़े बहुत वो इस साइड पर आए. तो जॉन एलिया की दो लाइनें हैं कि उसकी उम्मीद नाज का हमसे ये मान था कि उम्र गुजार दीजिए, उम्र गुजार दी गई. आपने कहा था कि ये काम कर दीजिए, सामने वाले ने कहा कि चलो जी उम्र अपनी गुजार दो, कि अगर मतलब हमारी इंतज़ार में हमसे तुम वाकई में इश्क विश्क करते हो तो कोई बात नहीं. तो सामने वाले ने उम्र गुजार दी गई. बड़ा रेयरेस्ट ऑफ रेयर कॉम्बिनेशन है. तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक लॉ ना इनैक्ट करना तब तक सीजेआई बैठेगा. तो पार्लियामेंट ने लॉ इनैक्ट कर दिया. तो उसका नाम है द चीफ इलेक्शन कमिश्नर अदर इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट कंडीशंस ऑफ सर्विस इन टर्म्स ऑफ ऑफिस बिल 2023, जिसके अंदर अब जो कमेटी जो बैठेगी दैट इज प्राइम मिनिस्टर, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, लीडर ऑफ द लार्जेस्ट पार्टी या लीडर ऑफ द लार्जेस्ट पार्टी इन द लोकसभा. आपको पता ही है कि हमारे यहाँ पे विपक्ष की आजकल क्या हालत है. So this judgment becomes extremely crucial. Do go through it, do note down all the details. And इससे पहले, like before this judgment, how were election commissioners being appointed? They were usually under Article 323, Part 15 of the Constitution, if I'm not mistaken about Part 15. But yeah, that should be, I think we should be close enough, but it should be Part 15 only. However, do correct me if I'm wrong in the comments as usual. And well, I'm not incorrect as usual, as in do correct me if I'm wrong in the comments if need be. So this is given under Article 324, very very important judgment. Then we go to Joseph Shine versus Union of India. इसके ऊपर भी we had provided a lecture. It is there on our channel. So this is a 2018 की judgment in which adultery was decriminalized, but that doesn't mean that adultery is being endorsed. And armed forces वालों ने पूछा कि भैया ये मतलब ये कैसे काम होगा हमारे लिए. तो अनबिकमिंग कॉन्डक्ट जो कि आर्म्ड फोर्सेज एक्ट वगैरह, जो आर्मी वाली जो एक्ट है, नेवी की जो एक्ट है, उसके अंदर द कॉन्डक्ट के अंदर अभी भी यू कैन बी प्रोसिक्यूटेड वेल इफ यू इंडल्ज इन सच प्रैक्टिसेस. नहीं तो यू विल गेट अ लॉट ऑफ फ्रीडम. एंड एज इट इज आर्टिकल 33 के अंदर ये दे भी रखा है दैट पार्लियामेंट कैन curtail the fundamental rights of those people in the services, right? And that is given in part 3 of the constitution. So the applicability of Joseph Shine versus Union of India was clarified and becomes an important judgment. If you want to watch that, the lecture is there on our channel. Then in reference Article 370 of the Constitution, ये तो just I think about 10-11 दिन पहले मैंने I think it was a 52-minute lecture. We had explained the judgment in which the abrogation of Article 370 was upheld. But एक चीज़ जो कि बहुत crucial इन्होंने बोली उसके अंदर, that the manner in which it was done via Article 367 की amendment was not exactly correct because it wasn't needed at all. तो काफ़ी लोगों ने उसमें भी कमेंट करा था कि यार ये समझ नहीं आया कि आर्टिकल 367 की अगर ये अमेंडमेंट कह रहे हैं कि अगर ये तरीका तुमने अच्छा नहीं अपनाया एंड दैट इज़ अल्ट्रा बायस, तो हाउ डिड यू अलाउ दिस अमेंडमेंट. एक्चुअली वो कह क्या रहे हैं कि आर्टिकल 367 को इन्वोक करने की इतनी ज़रूरत ही नहीं थी. You could have done it straight via 368 and therefore the methodology that you adopted was ultra-wise. But since आपने दूसरा भी तरीका अपना लिया उसके अंदर, तो आप this was absolutely legal to do. और सामने वाली साइड का जो मेन जो आर्ग्यूमेंट था कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली उनकी तो जी 1957 में गुजर गई, अब किससे पूछेंगे आप. तो वो कह रहे हैं जी वो तो ऐसे, तो फिर अगर ऐसे कुछ भी चीज़ लिख दो और ऐसे तो हम 200 साल तो वेट करते नहीं रहेंगे किसी की. तो लेकिन जॉन एलिया ने तो खैर करी थी. तो इसके अंदर यहाँ पर ये दिस बिकम्स एन इम्पॉर्टेंट लेक्चर. यूपीएससी अगर अटेम्प्ट कर रहे हैं अगले साल, इस जजमेंट की लेंथ और ब्रेड्थ प्रिपेयर करके जाइएगा. Even for prelims, even for anything. This is extremely crucial, and revise what Article 367, revise the entire methodology as to how they got rid of Article 370, because for sure in GS2, if I'm not mistaken, I think GS2 में ही आती है ना Constitution,
this becomes extremely important for them, because I don't focus on UPSC exams, I'm more focused on judiciary. Now Shilpa Shailesh versus Varun Srinivasan, in which Article 142 में power to do complete justice दे रखा. Now what that means is that even if you apply, do not pray to the court for something. Under their power to do complete justice, they can pretty much do anything. That is why the Supreme Court is supreme in nature. Alright, original jurisdiction Article 131 aside. So Shilpa Shailesh versus Varun Srinivasan में कहा कि if you approach the, now this is, of course, this is academic. That doesn't mean that you start approaching the Supreme Court for your divorce proceedings. It certainly doesn't work like that. This is quite complicated. We had done a lecture in this for our online CLAD PG batch. Since that exam is done, I'll just upload it to YouTube for you to understand it better. So this is power to grant divorce under Article 142. The Supreme Court said yes, we have it. We have that power. 141 is, of course, Doctrine of Stare Decisis. That is on precedence. CBI versus RR Kishore. This becomes another important judgment that was delivered in 2023. This is retrospective immunity against arrest. मान लेते हैं आप कोई सरकारी अफसर हैं and some statute is giving you some immunity for the time being. So they are saying कि ऐसा करते हैं कि कल को वो statute जो आपको immunity प्रदान कर रहा था उसको we have struck down. Do you still have immunity on it? So this was primarily relating to Section 6A of the Delhi Special Police Establishment Act 1946. Also relates to the CBI. तो डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस डायरेक्टर, ये वाली जो आपकी जो जजमेंट थी, that struck down that section and they said that now this judgment will have a retrospective effect. तो ये जो स्टैट्यूट जो स्ट्राइक डाउन किया गया है जिससे आपको इम्यूनिटी उपलब्ध थी, मतलब आपने अगर कोई उस टाइम पे ऑफेंस करा आपको, अच्छा चलिए थोड़ा सा इसको टाइमलाइन ताकि कंफ्यूज ना हो, दोबारा इसको रीफ्रेम करते हैं. मान लेते हैं आपने 1 जनवरी 2024 को कोई ऑफेंस करा, लेकिन आप इम्यून हैं उससे, और क्योंकि आप सरकार में हैं, सरकार में आप यूजली, इसलिए सरकारी नौकरियों की हमारे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक आस्पेक्ट ये भी कि पावर ज़्यादा है तो इम्यूनिटी भी काफ़ी ज़्यादा मिल जाती है फ्रॉम लॉज. एक आस्पेक्ट, नॉट द एंटायर डिस्कशन ऑफ कोर्स. तो अब वो मैंने इम्यूनिटी आपकी हटा दी है 1 फरवरी 2024 को. कैन आई स्टिल प्रोसिक्यूट यू? Yes, this is what the judgment is saying. Now this is explicitly barred by Article 20 Clause 1. तो यही इस जजमेंट की पूरी, मतलब पूरा आप कह सकते हैं कोर क्रक्स है. लॉ ऑप्शनल दे रहे हैं, कृपया करके इस जजमेंट को प्रिपेयर करके जाइएगा. एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन ऑन Article 20 Clause 1. ऑलराइट, देन वी गो टू Animal Welfare Board versus Union of India. तो back in the day Animal Welfare Board of India versus A Nagaraj, इसके अंदर Jallikattu was banned. But then Tamil Nadu government and other governments, they amended their local laws and wanted a special breed of animal to participate in this sport that have been specifically groomed for this sport. तो उनके अंदर this was upheld किया. Jallikattu now has been upheld via the amendments. So those amendments have been challenged in Animal Welfare Board versus Union of India. पहले DULLB का पसंदीदा सवाल होता था till 2022 कि Jallikattu was banned in which of the following judgments. अब तो खैर DULLB ही गुजर गया है बिकॉज नाउ इट्स अ जनरल पेपर. UPSC वाली जनता अगर ये लेक्चर देख रही है, इट इज़ अ डाइल्यूटेड CSAT. डू अटेम्प्ट इट इफ यू वांट टू टेक LLB एज अ बैकअप ऑप्शन. कॉक्स एंड इंडिया लिमिटेड वर्सेस सैप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड. इसके अंदर मेन जो जजमेंट का कोर क्रक्स है दैट कंपनीज आउटसाइड द आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट कैन बी मेड एज पार्टीज बाय ग्रुप ऑफ कंपनीज. डॉक्ट्रिन. अब इसके अंदर क्या हुआ था कि बड़ी इंटरेस्टिंग सी जजमेंट है. ये आपके जो ट्रैवल वाले जो भैया हैं हमारे कॉक्शन किंग्स, इन्होंने एक सॉफ्टवेयर बनाने को बोला सैप इंडिया को. अब सैप इंडिया से के बस की वो बात हुई नहीं, तो इन्होंने वो सैप एसी वालों को आगे बोल दिया कि तुम आगे बना लो. अब हुआ क्या कि कॉक्स एंड इंडिया का जो दिवालिया निकल गया, लेकिन उन्होंने फिर भी आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स इनके साथ इनिशिएट करी कि हमारी फीस जो हमने तुम्हें दी उसका रिफंड दो, तुम सॉफ्टवेयर नहीं बना पाए. अब इन्होंने एक नोटिस जारी कर दिया सैप जर्मनी को, जो कि बेसिकली इनके सारे प्रोजेक्ट की देखरेख कर रहा था. दैट वाज डन वाया सैप इंडिया. वो कहते हैं हम कौन है भैया, तुम्हारी आर्बिट्रेशन तो सैप इंडिया के साथ है. तो यहाँ पर उन्होंने कहा नहीं, हमने तो आर्बिट्रेशन क्लॉज इनके साथ करा था और तुम इन्हीं के भाई बहन हो, टेक्निकली स्पीकिंग सैप ही तो हो, तो आ जाओ. तो इसके अंदर उन्होंने कहा हम तो नहीं आ रहे. तो ये सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया. सुप्रीम कोर्ट ने इसमें जजमेंट दिया कि भैया अगर ग्रुप ऑफ कंपनीज हैं, मतलब टेक्निकली स्पीकिंग एक ही एंटिटी इनको कंसिडर कर ली गई, तो आप इनको आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट मतलब आर्बिट्रेशन में बिठवा सकते हैं. ऑलराइट, आर्बिट्रेशन एक्ट बहुत ही कमाल के एक्ट है हमारे यहाँ पे और अच्छी आपकी वो है, एक अच्छा लॉ है टू स्टडी. तो फॉर जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम्स स्पेशली द DJS विच आर एब्सोल्युटली इन लव विद आपका arbitration, this becomes an important judgment. All right, now of course there are many more judgments. However, I have
tailor made this lecture for the purposes of examinations, क्योंकि बाकी सारी जो judgments हैं वो तो अलग अलग sources पे available हैं. We need not do them. However, one more lecture I want to do on criminal law judgments. एक सुखपाल सिंह खेरा का तो मैंने lecture करा हुआ है, but however that lecture I wish to do specifically for Judicial Services Exam. Now this also appears in your prelims, of course, for Judicial Services Exams, prelims mainly, but for mains for various states I want to list out those judgments. That we'll do in a couple of weeks time from 2023, that is. All right, wishing you all the very best for any exam that you want to prepare. If you want to prepare for Judicial Services Exam, our DJS batch is starting in March, the offline one. If you want to consider that, well, do ping us, and that's all that I can say. Wishing you all the very best. Take very good care of yourself. Wishing you a very happy new year, and hope that 2024 brings in whatever is the best for you, not what you ask for, because we never really know what is the best for us. Whatever is the best for you, may God deliver that to you. Wishing you all the very best. Take care. Bye.